Hello dear students, in last lecture illustration number 15 is completed. Now to the next illustration number 16. Find the value of limit x tends to 2 in big bracket 1 by x minus 2 minus 2 by x square minus 2x bracket is completed. Okay, find the value. So now next step, write down limit x tends to 2. Okay, in first term no changes, as it is, write down in bracket 1 by x minus 2 minus 2 by, here denominators x is common. Now in bracket write down x minus 2, big bracket is also completed, x into x square, x into 2, 2x. Now next step, LCM, limit x tends to 2, x in bracket x minus 2 is our LCM. Here x minus 2 is already given, so first term multiply by x, x into 1, x as it is. In second term divide by x and x minus 2, none of value is given, so 2 as it is. Okay, done. Now next step, x minus 2 cut, limit x tends to 2, 1 by x, no more value is given in numerator, so 1, and divide by x, x tends to 2, value of x is 2. Your answer is 1 by 2, it means 0.5. Now next, illustration number 17. Find the value of limit x tends to 0 1 by x in bracket 2x plus 3 by 3x minus 5 plus 3 by 5. Okay, so here first of all in bracket LCM and cross multiplication find out. Now next step, limit x tends to 0 1 by x in bracket 5 multiplied by 2x plus 3 cross multiplication, 5 in bracket 2x plus 3 multiplied by 3x minus 5 divide by 5 in bracket 3x minus 5, one type of LCM method. Now next, expansion, limit x tends to 0 1 by x in bracket 5 into 2x 10x plus 5 into 3 15 plus 3 into 3x 9x minus 3 into 5 15 divide by, as it is, denominator 5 in bracket 3x minus 5, big bracket is also completed. Now next step, limit x tends to 0 1 by x 10x plus 9x 19x plus 15 minus 15, both are cut, divide denominator as it is 5 in bracket 3x minus 5. Okay, numerator denominator x cut. Now next step, limit x tends to 0
numerator 19 divide by denominator 5 in bracket 3x minus 5, putting value x tends to is 0. Now next step, 19 by 5 in bracket 3, value of x is 0 minus 5. Now next step, 19 by 5 in bracket 3 into 0, 0 minus 5. Now next step, 19 divided by 5 in bracket minus 5, 0 minus 5, minus 5, minus 5 into 5, 25. Your answer is minus 19 by 25. So you are completed for illustration number 70. आपके कोर्स में इस साल यहाँ तक की एग्जाम्पल है, ओके, 17 तक की. तो नाउ नेक्स्ट स्टार्ट फॉर सेक्शन ए. फर्स्ट MCQ. What is the modulus from of 0.3 neighborhood of 3? ओके, 0.3 neighborhood of 3 का हमें फाइंड करना है फॉर्म. neighborhood of 3 is given. Find the modulus form. तो मॉड्यूलस फॉर्म फाइंड करना हो तो 0.3 नेबरहुड ऑफ 3 है. अब इसका मॉड्यूलस फॉर्म में क्या आएगा, इसको कंपेरिजन करेंगे तो डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, इट मीन्स वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 0.3 एंड ए इज 3. सो इन मॉड्यूलस फॉर्म क्या होगा आपका, सो मॉड्यूलस फॉर्म x minus a less than delta, putting both the value a and delta. So now next step, x minus 3 less than 0.3. check it. MCQ कहाँ पे, ऑप्शन B is a correct. x minus 3 less than 0.3 for first MCQ. Okay, first MCQ your option number 2. Now next in second MCQ, what is the interval of 0.02 neighborhood of minus 2? 0.02 neighborhood of minus 2. Okay, within your definition, delta neighborhood of A, देखिए value of delta is 0.02 and value of A is minus 2. Interval form, क्या है, a minus delta comma a plus delta, putting both the value a and delta. Now next step, value of a minus 2 minus 0.02 comma minus 2 plus 0.02 with equation. Now next step, your answer is minus 2.02 to minus 1.98. check the answer, which option is correct. So option number C, minus 2.02 to minus 1.98 second. Okay, C option is correct. Now next third MCQ, what is the interval form of in modulus x minus 5 less than 0.25? Okay, modulus
अब इंटरवल फॉर्म दिया है, आपको क्या बोला है, व्हाट इज द इंटरवल फॉर्म, इसका इंटरवल फॉर्म, तो विथ इन योर डेफिनेशन a x minus a less than delta, so value of a is 5 and delta is 0.525. इंटरवल फॉर्म अभी हमने राइट किया है, इंटरवल फॉर्म a minus delta comma a plus delta, putting both the values a 5 and delta 0.25. now next step क्या होगा आपका, 5 minus 0.25 comma 5 plus 0.25, so your answer is 4.75 to 5.25 between. Check it, for your answer is A. First MCQ is the correct answer. Now next, fourth MCQ, what is the interval form of in modulus 2x plus 1 less than 1 by 5. ओके, इंटरवल फॉर्म आपको बोला है फाइंड करने के लिए, तो विथ डेफिनेशन। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 2 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होगा दोनों में डिनोमिनेटर्स में जाएंगे, a एंड डेल्टा के डिनोमिनेटर्स में जाएंगे, यानी कि हियर वैल्यू ऑफ a is 1 by 2 and value of delta is 1 by 10. 1 by 2 and 1 by 5 है, तो 2 डिनोमिनेटर्स में जाएंगे, 5 2 are 10, वैल्यू ऑफ a is 1 by 2 and वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 1 by 10. आपको इंटरवल फॉर्म बोला है, तो इंटरवल फॉर्म जो अभी हमने राइट किया है, इंटरवल फॉर्म a minus delta a plus delta, putting both the values, value of a 1 by 2 minus 1 by 10, 1 by 2 plus 1 by 10. यदि किसी को इसमें दिक्कत आएगी तो वो डेसिमल में आंसर राइट कर सकते हो, वैलिड है। नाउ नेक्स्ट स्टेप 10 LCM, तो 5 2 are 10, 5 minus 1 by 10, यहाँ पे 5 plus 1 by 10, so 4 by 10 to 6 by 10. Check it, which option 4 by 10 and 6 by 10. ओके, सॉरी यहाँ पे प्लस है यानी कि माइनस है आपका, 1 by 2 माइनस है, 1 by 2 माइनस यानी कि -6 आएगा, और यहाँ पे -5 एंड +1 यानी कि -4 by 10. चेक इट, सी ऑप्शन आएगा, -6 by 10 -10, क्योंकि आगे प्लस है, सो माइनस माइनस प्लस यानी कि वैल्यू ऑफ ए इज नेगेटिव, -1 by 2 -1 by 10, -1 by 2 +1 by 10, -6 by 10 to -4 by 10. Now next, fifth MCQ, what is the modulus form of n in bracket 5, 0.02, यानी कि कौन सा फॉर्म आपको दिया है, n मीन्स नेबरहुड फॉर्म इज गिवन एंड फाइंड द मॉड्यूलस फॉर्म. मॉड्यूलस फॉर्म आपको बोला है फाइंड कर, सो मॉड्यूलस फॉर्म क्या है, सो मॉड्यूलस फॉर्म इन मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा, सो वैल्यू ऑफ a क्या है हमारी 5 एंड डेल्टा 0.02, तो आंसर क्या आएगा, इन मॉड्यूलस x माइनस 5 लेस देन 0.02, ये हमारा होगा फिफ्थ MCQ का आंसर. चेक इट, ऑप्शन डी x माइनस 5 इन मॉड्यूलस लेस देन 0.02. नाउ नेक्स्ट इन 6 नेक्स्ट MCQ, if modulus form of capital N in bracket a comma 0.07 is in modulus x minus 10 less than k, then what is the value of k? वैल्यू ऑफ k क्या है, तो इसको हम a ने हमारा क्या होगा डेल्टा, नेबरहुड फॉर्म है a एंड डेल्टा, एंड हियर a एंड k मीन्स डेल्टा, तो डेल्टा डेल्टा, तो वैल्यू ऑफ k क्या होगी हमारी 0.07. ओके, नाउ नेक्स्ट
in MCQ number 7. What is the value of limit x tends to 3 3x minus 1? ओके, यहाँ अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, तो जो x है उसके प्लेस पे क्या राइट करेंगे 3. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप 3 इन ब्रैकेट 3 minus 1 9 minus 1, आंसर इज 8. चेक करो, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. D is equal to 8. Now next MCQ. What is the value of limit x tends to 4 in root 4x plus 9? यहाँ पे भी आपको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू. अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट मेंशन, तो x की डायरेक्ट वैल्यू राइट कर दो. नाउ नेक्स्ट स्टेप इन रूट 4 in bracket 4 plus 9 16 plus 9 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 5. क्या किया हमने, जो इक्वेशन दिया है उसमें वैल्यू राइट कर दी. 4 into 4 16 plus 5 25 और उसका स्क्वायर रूट निकाला, यानी आंसर इज 5. चेक इट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Now next, what is the value of limit x tends to 2 is 10. 10 is the constant, no variable is given x. So यहाँ पे ये की प्लेस पे आप कोई भी वैल्यू लो, आंसर आपका क्या आएगा 10 एज इट इज़, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट 10. ओके, 10 आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, उसको स्किप कर देते हैं. नेक्स्ट 11 भी नहीं है, स्किप कर दो उसको. एंड लास्ट 12. इफ y इज इक्वल टू 10 minus 3x and x tends to minus 3, then y tends to which value? Y tends to question mark. ओके, अब क्या करेंगे, x टेंस टू -3 होगी, इक्वेशन में राइट कर दो, यानी y टेंस टू आपको मिल जाएगा. सो y इज इक्वल टू 10 minus 3x -3, वैल्यू ऑफ x इज ऑल्सो -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, y इज इक्वल टू 19, यानी कि y टेंस टू 19. चेक इट, योर ऑप्शन C is the correct answer. Okay, so here section A is completed. Now next in section B, express 0.09 neighborhood of 0 in interval form. ओके, फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है सेक्शन बी में, इंटरवल फॉर्म. 0.09 neighborhood of 0. अब विथ इसकी डेफिनेशन कंपैरिजन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपेयरिंग 0.09 with 0.9 neighborhood
of 0 with नेबरहुड फॉर्म क्या है हमारा, डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, वी गेट a is equal to 0 and delta is equal to 0.09. अब आपको क्या बोला इन क्वेश्चन में, इंटरवल फॉर्म फाइंड आउट. इंटरवल फॉर्म a minus delta comma a plus delta, putting both the value a and delta. Now next step, 0.09 neighborhood of 0 is equal to 0 minus 0.09 comma 0 plus 0.09. Now next step, minus 0.09 to 0.09 for the first question. Now next in second question, ओके, जिस तरह हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन किया उसके फॉर्म के साथ, आंसर ए एंड डेल्टा का मिला, इंटरवल फॉर्म पुटिंग वैल्यूज. ओके, नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.001 नेबरहुड ऑफ -5 -5 इन मॉड्यूलस फॉर्म. आपको क्या बोला है, मॉड्यूलस फॉर्म फाइंड आउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग 0.001 नेबरहुड of 5 with delta neighborhood of A we get delta is equal to 0.001 and A is equal to -5. Now next write down in modulus form. Modulus form, in modulus x minus a less than delta, putting both the value a and delta, putting a is equal to -5 and delta is equal to 0.001. Now next 0.001 neighborhood of A is equal to, in modulus x minus -5 less than 0.001. So now next step, in modulus x minus plus 5 less than 0.001. Okay, so here second question is completed. Now next in question number 3, express in modulus x minus 10 less than 1 by 2. In modulus x minus 10 less than 1 by 10 in neighborhood form. यानी आपको जो दिया है वो क्या है, इन मॉड्यूलस फॉर्म, उसको कहाँ पे कन्वर्ट करना है हमें, इन नेबरहुड फॉर्म में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग इन मॉड्यूलस फॉर्म, कंपेयरिंग
in modulus x minus 10 less than 1 by 10 with in modulus form x minus a less than delta, we get a is equal to 10 and delta is equal to 1 by 10. Now मॉड्यूलस फॉर्म दिया आपने फाइंड कर दिया, फाइंड आउट इन नेबरहुड फॉर्म. आपको यस नेबरहुड फॉर्म बोलेंगे. कैपिटल N in bracket a comma delta, putting both the value. A is equal to 10 and delta is equal to 1 by 10. ओके नेबरहुड बोला था ना आपको, यस. नाउ नेक्स्ट इन मॉड्यूलस x minus 10 लेस देन 1 by 10 इज इक्वल टू कैपिटल N in bracket 10 comma 1 by 10. Okay, so question number 3 completed. Now next in question number 4, express in modulus 2x less than 1 by 2 in interval form. मैंने अभी आपको बताया था MCQ में मल्टीप्लाई बाई 2, इट मीन्स डिवाइड बाई a एंड डेल्टा, दोनों के डिनोमिनेटर्स में जाएगा 2. So here first of all comparing in modulus 2x less than 1 by 2 with in modulus form x minus a less than delta, we get a is equal to 0 and delta is equal to 1 by 4. The value of a is not mentioned यानी मैंने आपको बोला था 0 and value of delta 1 by 2 divide by 2 and get 2 to the 4, 1 by 4. Now next आपको कौन सा फॉर्म बोला है फाइंड करने के लिए, इन इंटरवल फॉर्म. सो राइट डाउन इंटरवल फॉर्म a minus delta comma a plus delta, putting both value a and delta, putting a is equal to 0 and delta is equal to 1 by 4. Now next step in modulus 2x less than 1 by 2 is equal to 0 minus 1 by 4 comma 0 plus 1 by 4. Now next step minus 1 by 4 it means 0.25 and 1 by 4 means 0.25, minus and plus, minus 0.25 to plus 0.25. Okay, now next in question number 5, express in n means neighborhood form is given n 50 comma 0.8 in modulus form. आपको क्या बोला है, modulus form find out. So first of all comparing in neighborhood form, comparing capital N in bracket 50 comma 0.8 with in neighborhood form capital N in bracket a comma delta, we get a is equal to 50 and delta is equal to 0.8. आपको बोला है मॉड्यूलस फॉर्म फाइंड आउट. सो इन मॉड्यूलस फॉर्म is equal to in modulus x minus a less than delta, putting both the values, putting a is equal to 50 and delta is equal to 0.8. Now next step capital N in bracket 50 comma 0.8 is equal to in modulus x minus 50 less than 0.8.
8. So here completed for question number 5. Next, in question number 6, if capital N is equal to, capital N in bracket a comma 0.2 is equal to in modulus form x minus 7 less than b, then find the value of a. ओके, वैल्यू ऑफ ए फाइंड करने को बोला है. अब सिंपल ये है यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने एमसीक्यू में समझा था. इस फॉर्म को आप कंपेयर करेंगे नेबर फॉर्म के साथ. वैल्यू ऑफ ए क्या आएगा आपका डेल्टा 0.2. मॉड्यूलस फॉर्म के साथ कंपेयरिंग करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए एंड इट इज़ वैल्यू ऑफ डेल्टा. आपको क्या बोला है? वैल्यू ऑफ ए. तो ए कहाँ पे है? हो गया डायरेक्टली प्रूव. ए इज इक्वल टू 7. आपको सिर्फ विथ सेंटेंस राइट करना है. फर्स्ट क्या करेंगे? नेबर्ड फॉर्म कंपैरिजन. ओके, इस तरह से राइट करेंगे आप. कंपेयरिंग capital N in bracket a comma 0.2 with in neighborhood form N in bracket a comma delta, we get a is equal to a and delta is equal to 0.2. ओके, फिर आप मॉड्यूलस फॉर्म को कंपेयरिंग करो. कंपेयरिंग in modulus x minus 7 less than b with in modulus form x minus a less than delta, we get a is equal to 7 and delta is equal to b. Therefore value of a is 7. आपको क्या फाइंड करने को बोला है? चेक इट. वैल्यू ऑफ a, yes, then find the value of a. a is 7. Now next, in question number 7, if in modulus form x plus 4 less than 0.04 is equal to in bracket k comma minus 3.96, then find the value of k. फर्स्ट मॉड्यूलस फॉर्म है, सेकेंड इंटरवल फॉर्म. फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमें बोला है. तो उसी तरह से हम कंपेयरिंग करेंगे. फर्स्ट राइट डाउन कंपेयरिंग इन मॉड्यूलस x प्लस 4 लेस देन 0.04 विथ मॉड्यूलस फॉर्म x माइनस a लेस देन डेल्टा, वी गेट a इज इक्वल टू -4 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0.04. ए क्यू -4 है, यहाँ पे प्लस है. सो माइनस माइनस प्लस, वैल्यू ऑफ ए इज -4. नाउ अनदर फॉर्म ऑफ कंपेयरिंग इंटरवल. सो राइट डाउन कंपेयरिंग इन ब्रैकेट के कॉमा -3.96 विथ इन इंटरवल फॉर्म ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा, we get a minus delta is equal to k first equation and a plus delta is equal to -3.96 in second equation. मैंने क्या बोला था? जिस इक्वेशन में वैल्यू दी हो उसमें डेल्टा और ए दोनों में से जो कोई वैल्यू हो वो राइट कर देना. तो आपको देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू -4, डेल्टा इज इक्वल टू 0.04, बोथ इज गिवन. तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में डायरेक्ट राइट करेंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप, putting a is equal to -4 and delta is equal to 0.04 in equation 2, equation 1, first equation ये. तो फर्स्ट इक्वेशन राइट डाउन a minus delta is equal to k, value of a -4 minus delta
0.04 is equal to k. Therefore, value of k is equal to minus 4.04. Okay, so your question number 7 is completed.